Hello students, Meenakshi Sin is here from Maths Gyan. This is my channel with new name. Previously it was known as Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sin. Trigonometry related questions there. We were doing exercise number 8.2 from this NCERT approved book. This is the second question of the exercise 8.2 related with the ratios. For ratios, all the values of these ratios should be known to you. Chart should be in your memory, otherwise you can't do it. Very easy. Only to check that whether you have prepared your chart or not. This is can be confirmed by this only. We have to do this 4-in-1 questions. They are 1, 2, 3, 4. These are the 4 columns. Solution will be here for question number 4, for question number 3, for question number 2, and for question number 1. Okay? Let's see. 2, 10, 30 upon 1 plus 10 square 30 is equal to what? Whether it's sin 60, 10, 60, sin 30 or cos 30. We have to find it. It means we should know the value of tan 30, only then we can obtain, and chart should be in your memory. Now I'm going to start this question number, first portion of question number 2. 2 tan 30 upon 1 plus tan 30 square. Square of the tan 30. Tan 30 is equal to 1 upon root 3. So that we can put here the value of root 3. Tan 32 into 1 upon root 3 upon 1 plus 1 upon root 3 whole square. This 1 upon root 3 whole square become 1 upon 3 itself, because squared. We have squared the square of a root 3 is equal to 3. So after getting the solution, it will be 2 upon root 3 upon 3 plus 1, that is 4 upon 3. That 2 get cancelled by these 2, will get here 1 by 2, and root 3 is there. This 3 will go upward. Answer will be root 3 by 2. And root 3 by 2 is the value of sin 60. It means this is the answer. Root 3 by 2. The value of this option is root 3 by 2. And root 3 by 2 as per chart is equal to sin of 60. This will be the answer. Second one is 1 minus sin square 10 square 45 upon 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45. 10 45 is equal to 1. So that it will be 1 minus 1 upon 1 plus 1. Square of the 1 is always done. So that is 0. 0 upon 1 is equal to 0. That is 0 किसका होता है? That is sin 0. So this answer will be this 0. Answer will be 0. This will be the answer. One line answer is there. Second one or third one. Sin of 2a is equal to 2 sin a for what value of a? For what value of a? Sin of 2a will be equal to sin of a into 2 times of sin of a. That is for 0 itself, because sin 0 is equal to 0. When sin 0, a is equal to 0, then 2a itself will become equal to 0. And hence this will be sin 2a is equal to 0, and 2 into sin a. 2 into 0 itself is equal to 0. It means this will be 0. Answer A will be equal to 0. 2a. Okay. This is the third. Now fourth one. Fourth one is 2 tan 30 upon 1 minus tan 30 square. Tan 30 is equal to 1 upon root 3. So that this is 2
into 1 upon root 3 upon 1 minus 1 upon root 3 square. This is the same as we have done previously in first case. But difference is that here we are having the positive 10 square with positive in denominator, while here is with negative sign, 1 upon root 3. This will be equal to 2 upon root 3 into root 3 upon 2, because this is 3 square होगा, 3 square minus 1 is equal to 2, 2 get cancelled, this is simple 3 now. Okay, then we'll get here simple root 3. Answer is this root 3 is for tangent of 60. Tangent of 60. So that answer will be here. This will be the answer. Now I am converting this solution in Hindi. 2 10 30 plus 1.10 square 30 में 30 10 की वैल्यू रखी, हमें पूरे रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो जब रखेंगे 2 10 30 में 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है जब, और इसलिए प्लस का निशान है, 1 प्लस 10√3 रखा, स्क्वायर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर हो जाएगा. 1/3 स्क्वायर होने के बाद 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा, और फिर इसको जब काटेंगे तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, यहाँ √3/2 बचेगा. सेम इधर है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, या 10 स्क्वायर 45 की डिग्री जो होती है, देन 45 इसको 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0/1, और 0/1 0 हो गया, और ये tan 0 के लिए ही इसकी वैल्यू 0 होती है. tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a. कौन सा एक ऐसा एंगल है जिसके दुगने का साइन लिया जाए उसकी वैल्यू सिंगल एंगल के साइन के दुगना होता है, ये वाला प्रूव है. तो जब a की वैल्यू 0 होगी तो 2a की भी वैल्यू 0 होगी. इसे साइन 0 sin 2a will be equal to 0 and 2 into sin a will also be equal to 0, so that a value will be 0. This okay. इसी तरह से 2 10 30 है प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, 10 30 की वैल्यू √3 होती है, 2 into 1/√3 और 1 माइनस 1/√3, इसको खोलेंगे स्क्वायर के 1/3 हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/3 तो 2 बचेगा नीचे, वो 2 इस 2 से कट जाएगा, और ये वाला 3 ऊपर चला गया, ये √3 नीचे आएगी, तो सिंपल √3 बचेगी, और √3 tan 60 की वैल्यू होती है. ओके, ये सॉल्यूशंस मैं आपको करने के तरीके बता रही हूँ, आप लोग अपने आप कीजिए. वैसे तो एक्सरसाइज वाइज मुझे करने पड़े, अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप करेंगे, करते जाइए, आगे क्वेश्चन आएगा. मैं स्टेप बाय स्टेप सबको करा रही हूँ. सब कमजोर बच्चों के लिए भी परफेक्शन होना चाहिए, जो परफेक्ट है वो तो है ही परफेक्ट. प्लीज़ कीप इन टच विद मी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. आगे मैं हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रही हूँ. आगे और क्वेश्चन बताऊंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन 4 करूँगी, बड़े वाले सिंगल करूँगी. ओके, गुड नाइट, सी यू.